Hello, my dear student. This is Suryanan, chemistry teacher. Welcome in my channel, Suryanan Teaching. Today we are going to start the new topic, that is unit number 2, solution. This is the class of chemistry, class 12, paper 1. Paper 1 of chemistry. So, my dear student, we already completed the chapter number 1, solid state, and we should read the chapter number 1, solid state, in the different way. So, my dear student, today we are going to start the unit number 2, the solutions. So we are discussing today the introduction of lots of things about the solution in this sort. So my dear student, a solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances whose composition can be varied within certain limits. मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यूनिट 1 पढ़ा, सॉलिड स्टेट बहुत अच्छे से एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किए. आज हम लोग केमिस्ट्री का पेपर 1 में क्लास 12 की क्लास ये सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 का. सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है जो दो या दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस के कंपोजिशंस के द्वारा बना होता है, जो वेरिड करेगा अपने सर्टेन लिमिट्स के द्वारा. अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? जिसमें सारे पार्टिकल्स मॉलिक्यूलर साइज के अप टू 10 टू द पावर -9 और उसका डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं मिक्सचर के, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं किसी भी फिजिकल मेथड से, चाहे वो फिल्ट्रेशन हो, सैटलिंग हो या सेंट्रीफ्यूगिंग हो. हर सॉल्यूशन जो बना होता है वो सॉल्वेंट से बना होता है, और या एक या एक से ज्यादा सॉल्यूट से. एक सॉल्वेंट क्या होता है? एक सॉल्वेंट एक ऐसा कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो प्रेजेंट होता है लार्जर अमाउंट ऑफ वेट देन द अदर कंपोनेंट टर्म एज सॉल्यूट. सॉल्यूशन आर वाटर called aqueous solution, and the solution in which water is not the solvent are called non-aqueous solution. The solvent in the non-aqueous solution are usually benzene, ether, carbon tetrachloride, etc. So my dear student, it is quite clear that a solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substance whose composition can be varied within certain limit. It means their composition can be vary from differentiation according to with the certain limit. In a homogeneous mixture, all the particles are of molecular size up to 10 to the power -9, up to 10 to the power 9 meter. And the different constituent of the mixture cannot be separated by any of the physical means methods like filtration, settling, centrifuging. Every solution is made up of a solvent and one or more solute. So a solvent is the component of solution which is present in larger amount of weight than the other component terms as solute. And solutions are what are called aqueous solution. Solution in which water is not the solvent are called non-aqueous solution. So my dear student, the solvent in the non-aqueous solution usually benzene, ether, carbon tetrachloride, etc. So my dear sir, thank you for watching my short. Give more views, like and share. This is Suryanan, chemistry teacher. Welcome in my channel.